अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक चाट बना लेते हैं। चाट खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो एक सिंपल सा चाट बना लेते हैं। तो फॉर दिस आई हैव टेकन 1 कप ऑफ ब्राउन बॉइल्ड चना। आप काबुली चना भी ले सकते हैं। मैंने रेगुलर चना लिया हुआ है। तो आई हैव सोक्ड एंड बॉइल्ड द चना. Add that to a bowl. Now add 1 onion sliced finely or chopped, 1 large potato boiled and cubed, 1 teaspoon जीरा पाउडर. इसके साथ अब एक टोमेटो भी ऐड करना है, बट सिंस माय डॉटर डज नॉट लाइक टोमेटोज, तो आई विल बी एडिंग दिस लेटर. बस सारा ऐड करके मिक्स करके उसको बोल में निकाल लेती हूँ. उसके बाद से टोमेटो ऐड कर लेती हूँ. बट इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू टोमेटोज, अभी ऐड कर लीजिए. deseed the tomato and chop them into fine pieces. अच्छे से मिक्स करिए. Now I've added 2 tablespoons of green chutney. ये हरी चटनी जो है I have made earlier and frozen in ice trays. So I'm using 2 cubes of that. If you're making fresh, you can use 1 to 2 tablespoons depending on the spiciness you need. Then add 1 teaspoon chilli flakes. Also add 2 tablespoons of खट्टी मीठी चटनी. खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी दोनों के रेसिपीज अपलोडेड ऑलरेडी हैं. I'll probably put the links to that in the description. Mix with a light hand. साथ में add 1 teaspoon chaat masala, a few chopped coriander leaves, garnish with khari bundi and fine sage. We'll call it mirmiria. What do you call it? It's that fine save. Like I mentioned earlier, I'm going to remove a little for my daughter and then I will add the tomatoes. After adding the tomatoes, mix once more and then add the papdis, crushed papdis or puris. Mix well and जो पापड़ीज हैं या फिर पानी पूरी के जो पूरीज हैं, you can use either one. Crush them finely and sprinkle over the chaat. Chaat is like a go-to dish during iftar and also is like an evening snack. It is very yummy, very easy to make. You can garnish further with more dry khari bundi and fine save. So please do try it out. Like, share and subscribe. Ingredients as always mentioned in the description box. Thank you for watching.